में अभी भी हमको ये नहीं मालूम विच इज कॉमन, बट हमको सब मान के चलना पड़ता है. बट अगेन इन्फेक्शंस माइट बी ऑफ वन वेराइटी, नॉट विद द मल्टीपल वेराइटी. हम कई बार उस टेस्ट को देखते हैं जिसमें कि हमको बहुत सारे इंटरप्रेट करते हैं सारे इन्फेक्शन का. सो दिस इज हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस. यदि आप देखोगे तो इसमें हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का नाम नहीं है. दिस हर्पिस simplex virus, majority of neonates herpes simplex virus infections are acquired at birth as a consequence of direct fetal contact with the infected birth canal or through an ascending infection after premature rupture of amniotic membrane. That means herpes simplex virus का जो transmission होता है from transplacental is less, so it is more common at the time of delivery. Secondary to hematogenous transplacental dissemination. अब suppose मैं यदि किसी infected mother का कुछ प्रोसीजर करता हूं, that might iatrogenically might create an infection into the fetus. Signs suggestive of congenital infection, already table has been summarized. The presence of any of these ultrasound signs is not diagnostic but merely suggestive of congenital infection such as cytomegalovirus, toxoplasma, rubella, varicella zoster virus or Zika virus, and should trigger testing for these infections. Moment you see these types of features in ultrasound, this has been given in the guideline of ISWAC that you should be as a trigger to test this infection. In cases with fetal hydrops or anemia, testing for parvovirus should be performed. Ab how to test mother and how to test fetus. These things will be discussed. Pregnant women who present with a non-vesicular rash, किसी भी तरह का यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन को suggestive of systemic viral infection should be offered testing for rubella and parvovirus B19. इनका टेस्ट करने के लिए यदि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है कि आप पहले इन्फेक्ट हो चुके हो और आपको दोबारा हो रहा है तो आपको उतना डेंजर नहीं है, ना आपके फीटस को है. Women who present with a facial rash like of slapped cheek should be exposure to toxoplasma and presenting with general malaise suggestive of systemic infection should be offered testing for this infection. Now, there is another important by guideline that travel history of the woman for parents to countries known to have Zika virus transmission should trigger testing for. This was very Latin American area में 8 to 10 years back. There was a epidemic sort of this high incidence of microcephaly baby born, and then they retrospectively found that there is a virus infection in the mother during their early pregnancy which creates microcephaly or small brain. So how to diagnose maternal infection? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैटरनल इन्फेक्शन को देखना और एक फीटल इन्फेक्शन. दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि वेदर इन्फेक्शन इज देयर. यदि इन्फेक्शन है तो कुछ के ट्रीटमेंट भी है, तो दोस ट्रीटमेंट हैज टू बी गिवन. द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर डायग्नोसिंग मैटरनल इन्फेक्शन आर enzyme linked immunosorbent assay, ELISA test, paired serology testing for virus specific immunoglobulin, that is IgM and IgG antibodies. Ideally with one test from before the primary infection is often helpful. आपने ब्लड लिया बुकिंग के समय, वो ब्लड रेडी रखा है, और बाद में यदि आपका इन्फेक्शन वाला कुछ प्रॉब्लम होता है और यू डू अ ब्लड टेस्ट एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इन्फेक्शन और इंक्लिंग ऑफ इन्फेक्शन और suspicion of infection, then you can pair this test with your previous record. It was negative, it comes negative, and it is positive, then it is an infection during pregnancy. Determine the timing of infection in relation to gestational age. Now, another very important thing which is now has been given in guideline is that antibody avidity testing can also be helpful in this regard. The longer the time since the initial infection, greater level of avidity. That means जो IgG बनेगा, immune response होगा. If she is immune competent, मतलब इम्यूनिटी कर सकती है, मतलब एंटीबॉडी बना सकती है. तो जो पहला इम्यूनोलॉजी होती है दैट इज ऑफ वैरायटी ऑफ IgM, ये गिरने जाता है. फिर इसके गिरने के समय ये एक्यूट रिस्पॉन्स है, एंड दिस इसके थोड़ी देर बाद
IgG gives is back, but if IgM is there,